शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जो क्लास है आज की, ये उर्दू में हो रही है। इसको बाद में मुख्तलिफ ज़बानों में डब करके रख दिया जाएगा उनके लिए, ठीक है। इंटर्नशिप की जो क्लासेस हैं, जो सिर्फ मेरी क्लासेस हैं, और जो बाकियों का जो कंटेंट आ रहा है वो इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में और मल्टीपल ज़बानों में वो आपके लिए अवेल किया जाएगा, ठीक है। जो आज की क्लास है ये हमारी 11th क्लास है गालिबन, राइट। 11th क्लास है हमारी उसकी। और यहाँ पर हम लोग जो है इंटर्नशिप में मजीद आगे जाएंगे, आगे बात करेंगे। नाउ कीप दिस इन माइंड कि हमारा जो जूम ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है वो आने वाला है। तो आगे जाकर 1-2 हफ्ते लगेंगे, शायद 3 हफ्ते लगेंगे। यहाँ पर जो भी लॉग इन करेगा तो उसको वो उसी वक्त जूम को ज्वाइन कर सकेगा जब वो अपनी ऑथेंटिकेटेड आईडी डालेगा। उसको एक यूजर नेम, उसको एक पासवर्ड, एक ईमेल एड्रेस दिया जाएगा। वो ईमेल एड्रेस से ही वो इस क्लासेस को लाइव ज्वाइन कर सकेगा। ये क्लासेस अब ब्रॉडकास्ट नहीं होंगी। वी आर नॉट गोइंग टू ब्रॉडकास्ट दीज क्लासेस एनी मोर। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज अब सारा काम शुरू हो रहा है। तो वो जो सारा काम जो शुरू हम करवा रहे हैं और जो बता रहे हैं, अब हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास आईडी हो और आप उसमें जाकर बैठ के देख सकें। सो यू नीड टू मेक श्योर। जैसे ये अभी YouTube पे चल रही है वीडियो, बाद में ये YouTube पे वीडियो आपको नजर नहीं आएगी। ये सिर्फ पोर्टल के अंदर होगी और आपको पोर्टल के अंदर जाकर वहां पर बैठकर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ गोइंग इनटू द पोर्टल। जूम ऑथेंटिकेशन जैसे ही आएगा देन यू विल बी एबल टू सी, ओके। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जो प्रोग्राम था हमारा इंटर्नशिप का, जिसमें हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले बहुत सारी चीजें देखी। हमने पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की। फिर हमने पीपल को डिसाइड किया कौन कौन से क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रोसेसेस के ऊपर हमने बात की कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, क्या है, किस तरह से हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेसेस बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अब एवरी वीक नजर आएंगे मुख्तलिफ तरीकों से ना। You'll be able to see these documents into the portal. In the portal, you'll be able to see the documents. You'll be able to access these documents. कुछ मुख्तलिफ सिस्टम्स में है, इधर उधर सब जगह। We will explain it to you कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट देखना है तो आपको कैसे देखना है, क्या करना है। और हम आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाना, डिजाइन करना, सब चीजें उसमें सिखाएंगे, बताएंगे, जो हम सब कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसीज लिखी जा रही हैं, कैसे काम किया जा रहा है, ये तमाम की तमाम चीजें आपको वहां पर नजर आएंगी। एंड यू विल बी अगेन एबल टू सी इन द पोर्टल, बिकॉज हम आपको एक एक डॉक्यूमेंट भर के दिखाएंगे। ये हमने इसको ऐसे भरा, हमने इसको ऐसे भरा, इसको ऐसे भरा, ताकि जब आप कहीं जाएं, सो दैट इफ यू गो समवेयर और आप कहीं काम कर रहे हैं, यू कैन टेल देम कि यस, मैंने ये काम ऐसे किया, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है। देखो, दुनिया में ये वाहिद इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, कि जो तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहा है। कोई तुम्हें दुनिया में जॉब डिस्क्रिप्शन, नो वन इन द वर्ल्ड टीचेस यू द जॉब डिस्क्रिप्शन, नो वन। आई मीन नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। आई डोंट नो अबाउट एनीवन। मुझे किसी का नहीं पता, तुम्हें पता है मुझे बताओ। देन वी गिव यू रियल लाइफ वर्क। जो काम हो रहा है, दिस इज एन एक्चुअल वर्क, जिसमें आपको डिजाइन करके बनाकर सब कुछ सिखाया जा रहा है, बना के दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। देन वी गिव यू MCQs एंड ऑल द थिंग्स कि आप उसको अपने हिसाब के उसके हिसाब से तैयार कर सको। When you complete all the internship MCQs, when you go through all the classes and everything, ठीक है ना, और अगर आप एजुकॉल का एग्जाम देते हैं, then you get the accredited diploma. Then we also help you in preparing your resume. But resume इस वक्त प्रिपेयर होता है जब आप सारे इंटर्नशिप के सारे सवालात कर लेते हैं और आप इसमें लाइव क्लासेस में बैठो भी ना, आपको फायदा होगा। Then we teach you how exactly to do the work. किस तरह से काम करना है, and that is your interview preparation. ताकि when you go somewhere and if they ask you how were you able to develop a project plan, we showed you project plan कैसे बनता है। It starts with people, processes and technology. What is our charter? What exactly are we trying to achieve? हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, ये सब चीजें हमने आपको दिखाई, बताई, सब कुछ करना, ठीक है ना। और वो सब चीजें हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। So we are teaching you each and everything from the ground up, ठीक है ना। और वो आपको देखकर खुद प्रैक्टिस करनी है, देखकर खुद प्रैक्टिस करनी है, देखकर खुद प्रैक्टिस करनी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, खुद करना है। दैट इज योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और अब अल रज़ाक प्रोग्राम जो नया शुरू होने वाला है, अल रज़ाक प्रोग्राम जो भी हमारे पास, और फिर आपको वैलिडेटेड डिप्लोमा भी दिया जा रहा है, हर चीज। तो ये दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ाए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाए, और ना रेज्यूमे भी आपका बना के दे, आपको
अगर आप एजुकॉल का एग्जाम निकालते हैं तो आपको जॉब कंफर्म जॉब प्लेसमेंट पे भी बिठाए। एक नई चीज है, दिस इज अल रजाक प्रोग्राम। अल रजाक इज वन ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह। अल रजाक जो है अल्लाह का एक नामों में से, बहुत सारे नामों में से 99 नामों में से एक नाम है, ठीक है ना। देर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है ना। अल्लाह ताला की बहुत सारी खुसूसियात हैं, उनमें से एक जो है अल रजाक, रिस्क देने वाला, ठीक है ना। तो अल रजाक प्रोग्राम जो है उसका अगर आपने पार्टिसिपेट करना है, यू नीड टू पास द एग्जाम्स। अगर आपने इंटर्नशिप के एग्जाम्स निकाल दिए, एचआर के एग्जाम्स निकाल दिए, ईक्यू के एग्जाम्स निकाल दिए, आपने एजुकॉल के एग्जाम्स निकाल दिए, यू पास ऑल ऑफ देम। एजुकॉल के एग्जाम के एमसीक्यूज निकाले और इंटर्नशिप वो इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन आपने दे दी, यू आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड इनटू अल रजाक प्रोग्राम। देन इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड अ जॉब फॉर यू इन योर लोकल कंट्री और अब्रॉड। दैट्स अवर जॉब। Then we will do all the work. Then you just sit back and relax. But to go for that, you need to pass all the things. So we will prepare you and put you forward in front of all of these employers globally. कि देखें, talk to him, talk to him, talk to his, talk to her, ठीक है ना। इन सबसे बातचीत करें। If you are interested, आप इनको please hire करें। That is our role. That is Al Razak program, ठीक है ना। But Al Razak program उन्हीं के लिए है जो कि एजुकॉल के पूरी तमाम चीजों को पास करके जाता है। You will know about all of these things. So ये तमाम चीजें जो है ना दुनिया में कोई भी नहीं कराता, सही है। तो इसके अंदर आपको सब चीजें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, करवाई जा रही हैं। वी आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपके लिए, ठीक है ना। फिर तो आपको एक पूरा वो डिग्री भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के पार्ट्स कौन कौन से हैं, अभी हमने ये आइडेंटिफाई किए हैं। देयर आर मोर विच आर कमिंग इन, ठीक है ना। आर्किटेक्चर डायग्राम कौन सा है, ये आर्किटेक्चर डायग्राम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट की वीडियोस थी वो हमने आइडेंटिफाई की और हमने बनाना शुरू कर दी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस इन देयर, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम करके सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू सी द वीडियो। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट ट्रैक यू आर इन, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ट्रैक आपने रजिस्टर्ड किया। अगर आप सिर्फ डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, देन यू कैन सी दिस क्लास व्हिच यू आर सिटिंग राइट नाउ, because this is the main internship program, right? And you will be able to see the GRC aspects of it and some action, not a lot of action, some action, यानी कि some आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ पर काम आएगा, you'll be able to see. However, जो दूसरी चीजें हैं, जैसे अगर आपने SysOps पढ़ना है या आप DevOps पढ़ना है या DevOps SysOps AI पढ़ना है, so you'll be able to see all the videos. So when you log on to the portal, जब आप पोर्टल में लॉग इन करेंगे, ठीक है ना, when you log on to the portal, you'll be able to see the courses. उसमें आपको कोर्सेज नजर आएंगे। जैसे आपको ना जैसे मेन इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको जो चीजें नजर आ रही हैं, ये जो मेरी क्लास चल रही है, ये आपको सारी वहां नजर आएगी। उसमें आपको एचआर का कोर्स भी पास करना है। यू नीड टू पास दिस एचआर कोर्स, ठीक है ना। इट्स वेरी सिंपल। यू नीड टू पास द इंटर्नशिप प्रोग्राम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शॉर्ट कोर्स। ये आपको पढ़ना है, समझना है क्या चीज है, किस तरह से है। द की टू इमोशनल इंटेलिजेंस EQ, आपको ये कोर्स भी करना है, ये कंप्लीट करना है। इसके छोटे से एग्जाम्स हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स है। वी रेकमेंड यू, स्ट्रांगली रेकमेंड यू टू गो फॉर दिस कोर्स। ये कोर्स आप जरूर करें, बिकॉज दिस कोर्स इज वेरी इट्स एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, ठीक है ना। ये कोर्स जो आपके लिए है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बिकॉज यू विल नीड टू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स है, ठीक है ना। For overseas, I think it's $75 for, I think for local, for other countries, इसकी फीस बहुत कम है, but this is a phenomenal course that you should do, ठीक है। But it's up to you, because you need the communication skills. If you don't have the communication skills, you will struggle, okay? Now, anyway, जब आप लॉग इन करेंगे अपने पोर्टल में, so type in, अगर जो SysOps पढ़ रहा है, जब वो SysOps लिख कर यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में जाएगा, just type in SysOps, तो यहाँ पर आएगा internship program SysOps and Cloud Track. As I said, there are multiple internships. One is the main internship. एक जो है ना main internship है. Main internship program is where you see my videos. जहां पर मैं आपको नजर आता हूँ, आपसे बात करते हुए, समझाते हुए, सब कुछ करते हुए ना। लेकिन जब आप फिर अगर आपने SysOps भी लिया हुआ है तो आपको इसमें अलग क्लासेस नजर आएंगी। अगर आपने SysOps लिया हुआ है, DevOps लिया है या AI Ops लिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको उसके हिसाब से चीजें नहीं। AI Ops वाला जो है उसको DevOps SysOps AI इस पूरे प्रोजेक्ट की हर चीज नजर आएगी, एवरीथिंग, कोई चीज उससे बचेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने बता दी है, अटेंशन स्टूडेंट्स, एक्साइटिंग न्यूज अवेट्स यू इन दिस कोर्स, ठीक है ना, ये सब चीजें में लिखी हुई है। VPC कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन टू VPC क्या चीज है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसका काम कैसे करता है, ये पूरा उसने बना के देखें, पूरी वीडियो 31 मिनट्स में उसने आपको एक्सप्लेन किया है।
इस पूरे टाइम में उसने आपको एक्सप्लेन किया है, इसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे लॉग इन करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह करेंगे, वीपीसी से काम शुरू कैसे होगा। ये वही वीपीसी है जो यहाँ पर आपको हमारे आर्किटेक्चरल डायग्राम में नजर आएगा, ठीक है ना, यही वीपीसी है, दिस इज द सेम वीपीसी, दिस इज द वीपीसी जो आपको नजर आ रहा है। एंड यू विल बी एबल टू, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप ना, देखिए कैसे, और फिर इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन और तमाम चीजें हैं वो आपको जीआरसी यानी कि मेन इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आपको वहां पर नजर आएंगी। मेन इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपको ये वीडियोस नजर आएंगी, यानी कि ये जो वीडियोस हैं ये मेन इंटर्नशिप प्रोग्राम में, दिस इज इन द मेन इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट, ये आपको वहां पर नजर आएंगी। और जो ये वाली वीडियोस हैं ये आपको सिसऑप्स के डिप्लोमा इन सिसऑप्स में नजर आएंगे, ठीक है ना, डिप्लोमा इन सिसऑप्स में, ठीक है। ये जो वीडियोस हैं ये आपको नजर आएंगी डिप्लोमा इन क्लाउड ऑप्स के अंदर, ठीक है ना, सो यू विल सी दैट इन डिप्लोमा इन क्लाउड ऑप्स, सॉरी डेव ऑप्स, ठीक है ना। और इफ यू आर स्टडीइंग डिप्लोमा इन एआई, ये अलग चीज है बिल्कुल, ठीक है ना, डिप्लोमा इन एआई, ठीक है। लेकिन अगर आपने एआई ऑप्स पढ़ना है देन यू गेट दिस एंड दिस एंड दिस ऑल टुगेदर, एंड दैट कंप्लीट्स द पिक्चर along with this, ठीक है ना, along with this, so that completes the whole picture कि पिक्चर क्या है, I mean how exactly all of these moving pieces are working. And if you want to study more offensive part, then you can go by the offensive part, right? तो ये आप अलग से ले सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, बट व्हेन यू गो इनटू द इंडस्ट्री, जो आपको सारी चीजें ना हम एक एक करके बताकर, समझाकर, कार्व आउट करके, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि अगर आप कंपनी में जाते हैं और वहां पर काम करते हैं पीसीआई डीएसएस का या कुछ भी, हाउ एग्जैक्टली डू यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देखें तो इसने पूरा आपको एक्सप्लेन करके, बताकर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन समझाकर, पूरी टेक्निकल चीजें सब इसने आपको बता दी हैं। पब्लिक सबनेट क्या है, प्राइवेट सबनेट क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल सबनेट से हो गए, सबनेट किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, CIDR ब्लॉक, हर चीज, एवरीथिंग वो आपको समझाता चला जा रहा है, ठीक है। यही सारी चीजें जब आप सीखते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी क्या क्या की पॉलिसीज हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, सब चीजें क्या हैं, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें तुम लोगों के इंटरव्यू की प्रिपरेशन। अगर तुम कहीं इंटरव्यू में बैठे हुए हो एंड दे आस्क यू, ओके टेल मी हाउ वर यू एबल टू कॉन्फ़िगर PCI, यू नो, अ VPC ऑन AWS, ठीक है ना, in line with PCI DSS, then you will explain to them मैंने कैसे काम किया, एग्जैक्टली ये वही काम है। So no one teaches you this thing, and that is what we're teaching you. This is your internship program. If you want to repeat this, अगर तुम चाहते हो कि यार मैं खुद इसको बनाऊं, ठीक है ना, तो alnafe.cloud पे तुम क्रेडिट्स लेके जाकर you can repeat this. But we will give you access to VPC. Like in few weeks time, we will give you access to AWS where you can log in and see the configuration. You can't do the configuration, you can't configure anything, but you can actually experience, touch and feel it. Okay, this is how I have to log in. I can see the VPC. I can see all the services running. I can see all the key aspects of it running. I mean, I can see, I can't do anything, but yes, I can see. मुझे नजर आ रहा है, I can see it, I can feel it, right? जिसने यहाँ पर देखें इसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से उसने काम किया, कैसे काम किया, if I zoom it out, right? So here उसने हर चीज एक्सप्लेन करके बताई हुई है। So he is explaining to you in detail subnet availability zone. जैसे जैसे आगे, अच्छा, this whole project will keep on changing because we have to configure availability zones as well. I mean, there's a lot of things happening in there. If you go back and if you look into the internship program, right, the diagram part, you will see there are different zones, right? There are different zones. If I zoom in, let's see if I can zoom in, right? You will see कि यहाँ पर दो ऐप सबनेट्स हैं, and this is availability zone 1 and availability zone B. This is 1 and this is B, and this is all globally load balanced, different regions में, right? So ये सब ये काम कर रहे होंगे. You will be able to see all of them, ठीक है? You will be able to see and feel all of these things, and that is our goal. Okay, we want to give you complete perspective of how things are really working out. Right, that is our goal. And if you want to configure all of these things yourself, अगर तुम चाहते हो कि यार नहीं मैं खुद जाके इस पे काम करूं, मैं खुद फील करूं, मैं खुद कॉन्फ़िगरेशन करूं, मैं खुद ब्रेक करूं, ठीक करूं, absolutely go and do it, buy the credits, or you can just put your own credit card. तुम्हें अगर credits नहीं लेने
अपने क्रेडिट कार्ड लेके जाके कर लो, बिकॉज दिस इज इनकरिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट इनकर कर रहा है. सो जो चीज हम तुम्हें दिखा सकते हैं, हम तुम्हें दिखा के बता सकते हैं. इवन लुकिंग एट दिस, अंडरस्टैंडिंग इट, रीडिंग अबाउट इट is enough for you to pass any interview and get the job. When you're sitting there, तुम ये सारे काम अकेले नहीं करोगे. There will be a team. You will be part of a team, and you will work on the dev side first before you work in the production side. And this is the learning process. This is our internship program. No one even gives you access to this. So अपने तुम CV में लिखोगे, ठीक है ना, मैंने VPC का सेटअप किया, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप्स को इम्प्लीमेंट किया, मैंने VPC के फ्लो को लॉग्स को सेट किया, मैंने कॉन्फ़िगर किया. I mean, these are all the things that we're going to write in your resume because you have done it, and you have to pass the MCQs because there are MCQs coming in. And मैं आपको जो internship के अंदर जो एजुकॉल का जो एग्जाम है उसके अंदर आपको मैं इसी तरह का डायग्राम दूंगा. We will give you a diagram. Okay, this is a diagram. ठीक है ना? Prepare a presentation on this network diagram and give us an interview. You know, what is this? How are we doing all of these things? Or build a design for us as per a business. It can be any question. The question तुम्हें दिया जा सकता है. You have to develop something like this, and then we will ask questions as per your design document. तो हम तुमसे पूछेंगे. This is a solution architecture. So we are preparing everyone at a solution architecture level. कि solution architect की तरह वो बात करके हमसे बता सकता है downstream, upstream, NAT gateways, all of these things. ठीक है ना? अब इसमें सिक्योरिटी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी. अब इसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होगी. देयर इज अ टन ऑफ रिक्वायरमेंट्स कमिंग इन. सो द रीजन आई टेल ऑल ऑफ यू इज टू स्टडी, ठीक है ना, ताकि जब तुम कहीं इंटरव्यू के लिए जाओ, बात करो, तो बोलो भाई आई नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट एपिसोड में ये चीजें मिली हैं, ये सिसऑप्स की चीजें मिली हैं. इसी तरह तुम्हें जब डेवऑप्स की वीडियोस आएंगी, यू विल बी एबल टू सी द क्यूबरनेटीज एंड ऑल द अदर थिंग्स इन देयर इन द डेवऑप्स साइड. Right, because इसके अंदर DevOps sites की पूरी videos हैं. There are full videos in the DevOps site as well, right? If you can go up, you'll be able to see कि यहाँ पर मुख्तलिफ videos हैं DevOps के अंदर. DevOps के अंदर देखिए यहाँ पर NAT gate ये SysOps है, but there's a DevOps site जिसके अंदर आपको ECS features, उसका workflow, configuration, there's a lot of things जो आपको सब चीजें बताई जा रही. फिर उसके बाद DNS का है. AI के अंदर that's the most interesting part. AI के अंदर आपको AI को किस तरह से इन्फ्यूज किया जा रहा है, because we are experimenting it ourselves right now as we speak. हम खुद भी इसको एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, कि उसमें क्या चीज काम करेगी, क्या चीज नहीं करेगी. एंड दैट इज वेयर अवर रेजिडेंट AI के जो एक्सपर्ट्स हैं उसके ऊपर देख के काम कर रहे हैं. एंड वी वांट टू शो यू कि इन रियलिटी काम कैसे होता है, हाउ डज इट रियली हैपेंस, राइट. सो दिस इज द क्लास of today. It's a very short, brief class. हमारा मकसद था आपको दिखाना, करना. Go online, log on to the portal, start reading. Okay? Start reading, start reviewing the videos. This is the new content, and every week you will start seeing the content. Next week, we will dig in, take a much further deep dive and look into all the things. ठीक है? मैं इनको, before this class, I always meet with this team internally and tell them how and what they need to do. So they are following my instructions. As a CIO of the organization, as a CTO, as a CEO of the organization, I am guiding all of these guys. As a CISO, all the C-like titles are with me. I'm guiding these guys how to do these things properly. और यही चीज हम आपको सिखा रहे हैं. So जाइए, इसमें अपनी प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, ताकि जब आप कहीं बैठे हुए हों, when you're sitting somewhere, when you're going for an interview or anything like that, you are able to tell them, yes, I know how to do this. Yes, I know how to do that. Yes, I know how to configure all of these things. जी मुझे सब मालूम है. I can do all of these things. मैं आपको करके दिखा सकता हूँ. And that's what we are preparing you for, right? इसी के लिए हम आपको तैयार करके आगे भेज रहे हैं. इस वक्त दुनिया में अगर आप सिर्फ लिखें क्लाउड, you will see सिर्फ उसके ऊपर, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में कंट्री वाइज लिखें, अगर आप just type in country wise, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में you see 152,000 jobs. If I just go on Indeed global, right? Wherever you are in the world, कहीं पर भी बैठे हुए हो, remote jobs करनी है, कुछ भी करना है, you can do all of these things. UK में हो, US में हो, Canada में हो, wherever you are, just type in cloud, ठीक है ना, cloud, because there are certain keywords जो तुम्हें search करने होते हैं, and you'll be able to find the jobs, कि तुम्हें क्या jobs कहाँ किधर कैसी हैं, ठीक है ना. And that's what we are trying to teach you.
दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच यू कि भाई एज एन आर्किटेक्ट या एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर या एज अ सिस्टम इंजीनियर या तुम एज अ बेसिकली आईटी के अंदर जाते हो या जेनरेटिव आईटी में जाते हो, तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना? एज अ डेटा एनालिस्ट जाते हो, एज अ डेटा साइंटिस्ट जाते हो, तुम्हें करना क्या है? दीज आर ऑल द की थिंग्स, यही काम करना है, ठीक है ना? अगर डेटा साइंटिस्ट के रोल्स को सर्च करते हो, ठीक है, 10,000 रोल्स वहां पर है। अगर डेटा साइंटिस्ट के रोल सर्च करते हो, डेटा साइंटिस्ट करता क्या है, किस चीज पे काम करते हैं, यही डेटा होता है। इन्हीं यही सारी चीजें डेटा निकालनी, इसी के ऊपर काम करना। तो अगर तुम्हें ये सारा काम पता है, तुमसे बेहतरीन को डेटा साइंटिस्ट बन नहीं सकता, ठीक है? अगर तुम्हें सारा काम पता है, तुमसे बेहतरीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदमी बन नहीं सकता। जेनरेटिव एआई इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड लिखूं, ठीक है ना, तो इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर 175,000 जॉब्स नजर आ रही है। हर पोजीशन में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है ना, कोई भी साइबर सिक्योरिटी का बंदा हो, ठीक है ना, सेल्स में हो, कहीं पर भी हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, कुछ भी हो, वेरेवर यू आर, तुम्हें जेनरेटिव एआई पे काम आना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज तुम्हें सोल्यूशन को डिजाइन करना, खड़ा करना, कन्फिगर करना, इंप्लीमेंट करना, बनाना, एक्सप्लेन करना, जेनरेटिव एआई की इन्फ्यूजन करना, सब तुम्हें आ गया। अब इसके बाद क्या चीज बची? आज मेरे पास एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है ना, फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। उसने कहा कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली है, जॉब नहीं मिल रही मुझे, couldn't find any जॉब, मैं क्या करूं? एक आया इंजीनियर जिसने जो है ना बेसिकली कोई किसी सोलर कंपनी में काम करता है, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट समथिंग। इन दोनों को मैंने कहा कि इफ यू स्टडी एआई ऑप्स, डेवऑप्स ऑप्स एआई, जिसमें ये सारी चीजें और डीसीसीएस पढ़ा है, सब कुछ जा रहा है, यू आर केपेबल टू अप्लाई फॉर एनी जॉब इन दैट कंपनी, एंड व्हेन यू गो देयर दे विल थिंक वेयर शुड वी प्लेस यू, ठीक है ना, वेयर शुड वी प्लेस यू, बिकॉज यू नो ऑल द की एस्पेक्ट्स, यू आर द परफेक्ट फिट फॉर अस। बट अगर तुम एक चीज पढ़ रहे हो, देन दे विल थिंक ओके वी कैन प्लेस दिस पर्सन in diploma in cloud cybersecurity pada, we can place him here. This person, he knows about DevOps, we can place him here. This person knows SysOps, we can place him here. This knows AI, we can place him here. But if you know everything, then the company will be coming after you, say, yaar, dekho, hire this person because he know about all these aspects and he's perfect fit for us. So present yourself as the perfect fit. You know, like in Islam, there are 7 levels of Jannah, 7 levels of paradise. If you ask someone, what do you want to do? He will say, kahan jana hai? Where do you want to go? He say, the highest level of paradise, right? How can he go to the highest level of paradise? You have to work hard in all aspects of your life in Islam. Everything. Yahan par, yahan par, yahan par, yahan par, yahan par. Then you can go there. So if you want to be in the company where they say, okay, this has become our requirement, we need to pick him up from his country or wherever he is, do this, because that is the silver lining, ठीक है ना, between you and your success. That is the silver lining. If you have identified the silver lining, तुम्हें ये silver line नजर आ गई है, इसको scratch करो, you will go up. That's what you have to do. Okay, so ये सब चीजें आपके लिए ready हैं, आप जाएं वहां पर access करें, देखें, पढ़ें, समझें इसको, ठीक है? There are new things coming up. हम कुछ नई चीजें भी लेकर आ रहे हैं, नई लैब्स आ रही हैं. There's one more thing I want to tell you. जिन्होंने RQF level 5 लिया हुआ है, DevOps and SysOps, उनको हम कुछ नई लैब्स दे रहे हैं. There are new labs coming in. I think they will be released in the next 1 week or something like that, 1 to 2 weeks. These are all completed. ठीक है? Very interesting labs हैं, बड़ी मजेदार labs हैं. What are the labs? ये अभी latest labs complete हुई हैं. These are fresh, ठीक है ना? Freshly completed. ये जो labs हैं, इसमें हमने आपको पूरा बताया है, setting up AWS EC2 instance for Docker. पूरे Docker के ऊपर सारी labs हैं. Then there is DevOps and SysOps Bash, उसके ऊपर पूरी है. Bash को AWS में DevOps SysOps के context में कैसे यूज करना है. ये RQF level 5 का जो डिप्लोमा है, this is diploma in Dev SysOps, ये अलग है, ठीक है ना? क्योंकि जो हायर लेवल्स हैं, अच्छा, अल रज़ाक प्रोग्राम 5 एंड अबव के लिए, बिकॉज यू नीड टू हैव मल्टीपल स्किल्स. बिकॉज अगर हम किसी को किसी कंपनी में आपको उसके सामने रखते हैं ना, वी नीड टू मेक श्योर कि आपको सारा काम आता हो, अदरवाइज फायदा नहीं है ना. वी नीड टू मेक श्योर कि आप जो है ना बिल्कुल तेज काम करने वाले हो, ठीक है? पाइथन ऑटोमेशन में कैसे करना है, ठीक है? उसके बाद फिर इसमें यहाँ पर जो है ना फ्लास्क, ठीक है ना, फ्लास्क विद पाइथन में कैसे काम करें. there's a lot of, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, there's a lot of things, ठीक है ना, जो इसमें हमने चीजें डाली हैं.
ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो ना इसकी पूरी जो मास्टरी है, वैग्रेंट के ऊपर कैसे काम करना है। अच्छा, इसके अंदर क्यूबरनेटिस के चारों कोर्सेज की नई लैब्स भी बन चुकी हैं, वो भी आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्यूबरनेटिस का क्लाउड नेटिव मास्टरी देखना है, पूरा हमने क्लाउड नेटिव के ऊपर करके दिखा दिया। अभी इसकी ओपन सोर्स लैब्स के ऊपर अलग काम हो रहा है। तो एवरी 3 months ये टोटल जो लैब्स हैं, ये जो हैं टोटल 105 लैब्स हैं, बिकॉज ये टैब को अगर मैं नहीं गिनूं, इस टैब को नहीं गिनूं, ठीक है ना, तो 105 लैब्स, 105 लैब्स, इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट। एक एक लैब में आपको एक्सप्लेन करके बताया। ये आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। कोई पूछे आपसे हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट इट, कोई आपसे पूछे ओके टेल मी, यू नो, how were you able to implement EBS backend storage, for stateful applications? कैसे करोगे? You can explain it. अच्छा, auto scaling with AWS कैसे तुमने की? You can explain it. अच्छा, network policies Amazon VPC में CNI के अंदर कैसे किया? You can explain it. ठीक है ना। EKS के अंदर CI/CD की pipelines उसके ऊपर कैसे काम किया? Code suite के अंदर you can explain. ये उनकी native है, open source पे अलग बन रहा है। In the next 2 months, you'll be able to experience another 100 labs. So ये जो मैं कहता हूँ सबको कि भाई ये जो tracks है ना, these tracks are dynamic. We will keep on adding content, and this is all designed in line with your interviews. And that's exactly what we're doing. ताकि तुम जब कहीं बैठो, तुम बोलो भाई DevOps हो, SysOps हो, AI हो, Generative AI की infusion हो, LLMs हो, Llama हो, Cloud हो, I mean OpenAI हो, ChatGPT-4, whatever you want to use. I can design and develop a solution for you which can manage all of these things. That's where we want you to place in, so that you are implementing, ताकि तुम्हारा जो कैरियर का जो ट्रेजेक्टरी है ना, वो यूं हो, ना कि वो पहले यूं जाओ, फिर यूं जाओ, फिर यूं जाओ, फिर नीचे गिर जाओ, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे, फिर ऊपर। नहीं, हाउ कैन यू बी हियर? यू कैन ओनली बी हियर अगर तुम्हारे पास इतनी मेहनत करते आ रहे हो कि then you can just go straight, right? Just go straight, right? That's what we are trying to do. Just like SpaceX ने जो है ना, जो रॉकेट बनाया, the rocket that they designed, it goes straight up, right? So we just want to make sure कि आपके पास सब चीजें हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई और वो दी गई हैं, और ये सब आपको मिलेंगी। लेवल 4, लेवल 3 में और 4 में जो काम देना था, वी हैव गिवन यू। लेवल 5 से अबव में सब काम है, वो ज्यादा काम है, ठीक है, उसमें आपको दे रहे हैं, हमको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। इंटर्नशिप, यू आर ऑलरेडी लर्निंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन लेवल 4 and 5 and 6, व्हाटएवर यू इज, ठीक है ना। ये सारी इंटर्नशिप की चीजें जो हमने वहां पढ़ानी है इंटर्नशिप में, वो हम पहले से भी आपको करवा रहे हैं, ताकि यू नो। और अगर आपने इन्हीं चीज को प्रैक्टिस करना है, ये 105 106 लैब्स जो हैं, अगर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन देम एंड गेट देम डन, एंड वी विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, हम आपको उसका पूरा पूरा कोड दे रहे हैं, आपने ये रन करना है, ये रन करना है। अब्दुल्ला तारिक, मुझे शेयर करना जरा, मेरे साथ ना उसामा ने एक फाइल शेयर की थी which showed all the things ना। So I just want to show कि कैसे उसमें कहाँ पर जो है ना वो चीज इनके, ये लोग लैब कैसे प्रैक्टिस करेंगे ना। Can you show me that please? Can you give me access to that? There is a folder. I don't know if Osama is here or not. So I'm going to show you something. मैं आपको वो आखिरी चीज दिखा देता हूँ, and then we will wrap up the class. कि इसके अंदर कैसे काम करना है, क्या करना है। We have given you all the things. हमने आपको सारी चीजें दे दी हैं. You'll be able to see that in the portal anyway. ठीक है? So QB Bench, Service Mesh, all of these things, ये सब चीजें वहां पर मौजूद हैं, आप जाके कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और मजीद चीजें भी करवा दूंगा। हम लोग पूरे की पूरे जो DevOps SysOps हैं, उसमें जितने कोर्सेज हैं, उनकी हैंड्स ऑन लैब्स जो है ना बना कर रखते चले जा रहे हैं। सो मैं जिसको कहता हूँ ना कि यू कैन कम, आवर गोल इज दैट यू कंप्लीट द कोर्स एज मच एज यू कैन एंड गेट ऑन द जॉब। जाओ जॉब पे जाके बैठ जाओ, ठीक है, दैट इज अवर गोल। लेकिन जॉब पे जाने के बाद, बैठने के बाद, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स। तुम करते रहोगे, यू वोंट बी लेफ्ट बिहाइंड। मतलब ये नहीं कर सकता कि नहीं, आई एम गोइंग टू अनसब्सक्राइब। यू कांट, वंस यू आर हुक्ड इन, यू कांट अनसब्सक्राइब योरसेल्फ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस अब्दुल्ला तारिक, बोलिए अब्दुल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, आई हैव जस्ट स्पोकन विद ओसामा एंड राइट नाउ ही इज एट द हॉस्पिटल currently. So okay, that's fine, it's okay. You don't have as to for the tell me file, that over I here. don't have it. You don't have to tell me, just message me, say कि भाई it's done, because we will be recording this right later on in multiple languages. So don't just say, I don't need to know who's at the hospital. May Allah give him shifa, okay, may Allah cure him.
But anyway, so we will आपको आपके पोर्टल में ये सब labs नजर आएंगी. You can go in and you can start attempting those labs there. ठीक है? You'll be able to learn all of these things as well, because as I said, our goal is to make sure कि आप जहां पर भी जाएं, जिधर भी जाएं, wherever you are able to secure the jobs at a much faster pace. And that's exactly what we're trying to do, कि हम आपको job description पढ़ाए जा रहे हैं और उसी के इम्तिहान भी ले रहे हैं. ठीक है ना? We just want to focus on the key job descriptions and nothing else. हमारा जो focus है वो job description के ऊपर ही है, nothing else. और we don't want anything else for the students. We just want them कि वो job पकड़े and they are sitting on the job. Our goal is not कि वो 100% course complete करे. If he completes 80% course, he can secure the job. 75% course, he can secure the job. That is our goal. That is our goal. देखें, अगर मैं आपको Kubernetes को दिखाऊं, Kubernetes की job इस वक्त UK में और USA में अगर आप जाएं, if you go to, like over here on LinkedIn, and you just type in worldwide and just type in the Kubernetes के अंदर worldwide क्या नजर आ रहा है, you will find 1 लाख jobs हैं. ठीक है ना? हर कंट्री में आपको मिलेंगी, रिमोट मिलेंगी, हाइब्रिड मिलेंगी, हर किस्म की मिलेंगी आपको. ठीक है? वी आर ऑलरेडी गोइंग इनटू प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज ओवर हियर एज वेल. यूके में 2300 जॉब्स. ठीक है? एंड इफ यू लुक फॉर द रिमोट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 50% रिमोट है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियर, DevOps engineer. I mean, wherever you go in the DevOps, they will ask you for this. And you have the skills. आपके पास skills हैं. ठीक है? ये skills आपके सारे दिए जा रहे हैं. ठीक है ना? Just look at the salaries, where the salaries are starting from. So our goal is कि आप वहां जाकर बैठें और वहां जाके काम शुरू कर दें. Because आप CV में लिखेंगे मैंने EKS को ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे configure किया. And that's what you're learning. And that is our internship program. Okay? Because you have to go through the HR policies and all of those things and pass the exams as well. So we now have, then we can say it with certainty, yes, you have done all of those things. Okay? So Jazakallah khair. I will meet you next week and we'll go through the project further, look at the documentation parts, other aspects as well, some challenges, some roadblocks. We will look at all of those things as well. Okay? Jazakallah khair. I will meet all of you next week, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.